The story of 30,000 people in Mumbai who were rehabilitated on the promise of a better life. In 2017, thousands of houses near the Tansa water pipeline in Ghatkopar were razed and the occupants rehabilitated to Mahul in Chembur. But since then, the new houses of the residents is nothing less than a death trap. With the colony located right in the middle of 3 refineries, the air in Mahul is thick and pungent with emissions from these industries. Residents are now plagued by illnesses. The area has no municipal hospital and the residents have to travel a minimum of 11 kilometers to reach the closest hospital. In fact, 12 kilometers away from their original settlement, and with poor transport connectivity, many of the residents have even lost their jobs. With no immediate resolution in sight, Mira now brings you the plight of these rehabilitated people, thousands of them from Mumbai. Let's take a look. Skin conditions, respiratory problems, low immunity, irritation in the eyes and throats are some of the health complications that almost 30,000 residents are afflicted with in Mahul, a neighborhood in Chembur, Mumbai. Rehabilitated by BMC last year with the promise of a better life, today they are living with only basic amenities and smoke-blenching chimneys from refineries. This has cost them both their health and livelihoods. Malta Devi, a 30-year-old mother, shifted here 3 months ago. She claims that the poor air and water quality here has affected the health of her children, specifically their skin. पहले तो अच्छा था, जब ये 1.5 महीना 2 महीना तो अच्छा था, अभी ऐसे हुआ है। अभी 15-20 दिन से ऐसा हुआ है। पहले कुछ भी नहीं था, 2 महीना तो आराम से ही लोग थे, उसके बाद में ऐसा हुआ। अभी 15-20 दिन से हुआ है। उसमें तो एक ही बार भी गई थी तो दवा दिए थे, तो वही दवा खिलाई थी, फिर उसको दवा से नहीं आराम हुआ था, तो दूसरे फिर प्राइवेट में गई तो उधर से लेके आई तो थोड़ा आराम पड़ा, वो दवा से थोड़ा आराम पड़ा था। यहाँ जब से आए हैं तब से मतलब 1 महीना 10 दिन तो सही था, लेकिन इसके पहले फिर बच्चे लोग को बुलाया, अब इतना बुखार और ये दाना सब इसके नाते से सब परेशान है। On May 13, 2017, nearly 1,000 slums were razed by the BMC to make way for the Tansa pipeline. Residents from affected areas were rehabilitated by the BMC and relocated to Mahul, known to be a heavy industrialized area with Hindustan Petroleum and Bharat Petroleum refineries operating there. Citizens allege that the air in the colony is thick with emissions from these industries, and the lack of hospitals in the area is only making matters worse. जब से आए तब से हमने ऐसे जगह पे हमारे हस्बैंड मतलब उनको हिलने की ताकत नहीं है। पहले हार्ट का प्रॉब्लम था तो हमने हार्ट का ऑपरेशन कराया। अभी वहाँ से आने बाद उनको वापस दमा लगता है, ब्लड प्रेशर 258 हो जा रहा, शुगर उनको 340 बढ़ जा रही है। आपको लग रहा है कि ऐसी सुविधाएं हैं कि आपको? नहीं, यहाँ पे वही दूर का ही हमारे को मिल रही है, तो दूर जाने के लिए हमारे पास गाड़ी भाड़ा का तकलीफ है। सुविधा यहाँ कुछ भी नहीं थी। जब से हम आए हैं इधर, हमको राजाईबाड़ी जाना पड़ता था, और पापा तो उनको कैंसर हो गया तो एक मई को डेट हो गया उनका। अभी फ़िलहाल मैं बीमार हूँ, मेरे को टीबी का बीमारी हुआ है और मेरी मम्मी भी बीमार है। पैसा खर्चा हो गया कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो कमाने वाला था तो वो मर गया। अभी हम किसको बोले किसको नहीं बोले। हम विद्यालय में रहते थे तो हमको कोई तकलीफ नहीं था। जब से इस माहौल में आए हैं ना, तब से ये हम लोग का हाल है। 2 months ago, only a small hospital was built here by the BMC after repeated complaints from the residents of illness. But here you can see what the residents have been claiming, that this particular small clinic lacks basic facilities and even adequate facilities or treatment that a citizen or a resident needs on an urgent basis. And that's why they have to travel very far off, and the nearest hospital is 11 to 12 kilometers away, and the only option during emergency they have is Rajawadi Hospital. In fact, in 2015, the National Green Tribunal had passed an order saying that Mahul is a highly polluted area that was not fit to stay in. What is even more disturbing is that rehabilitating the residents 12 to 15 kilometers away from their original settlement to a place with poor transport connectivity has made most of the children quit their schools.
Though the residents have been staying in Mahul complex for the last 1 year, they refuse to accept it as their home and demand better for themselves. Residents say that it's a slow poison which is killing them. हमको जीना है, हमारे बच्चों को जीवन जिंदगी देनी है। नहीं, आपने जो हमको सुविधा तुम्हारी हमको नहीं चाहिए। हमारी तुम्हारी बीएमसी हमको किसी काम की नहीं, हमको सिर्फ चाहिए हमारी जिंदगी। हमको यहाँ से निकलना है, बस निकलना है और कुछ नहीं करना है। आप बोलते हो स्वच्छ भारत का जो नारा लगाते हो, क्या हम स्वच्छ भारत रखेंगे? तुम सिर्फ अपने लिए रहते, तुम 4 दिन यहाँ रह के देखो, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की नर की जिंदगी किस तरह की जी जाती है। यहाँ आने के बाद 100 से ज्यादा लोग यहाँ मर गए। यहाँ सबके घर में आए दिन माहौल से एक बॉडी जाती है हर एक वीक पे। स्लो पॉइजन, यानी सबको स्लो पॉइजन से मरना है। आज नहीं तो कल उनको धीरे धीरे वो कैंसर के जैसा रोग होने वाला है। इधर के लोगों को स्लो पॉइजन दे रहा है गवर्नमेंट इधर। Respiratory problems, skin diseases, low immunity, children quitting the school are all of these problems that almost 30,000 residents had to face only in the span of this 1 year after BMC rehabilitated them here in Mahul. The civic body says that they did not have any other option, but the here residents, what they are facing is the fumes that we see at this point in time behind me. That fumes from the refineries is filling the air, and the distance that you see is not even 20 meters between the residential buildings and the refineries. Here the citizens are only pleading that they don't want to live here between gas chambers, which in a way is impacting their health in a big way, and they don't want to die here in between these gas chambers. With camera person Shashank, this is Disha Shah reporting here for Mirror Now. And with that